Namaskar, I am Abhijit Roy, an investment banker. Today, I am in front of you to take you through the amazing journey of startups and how, as an individual investor, you can benefit out of it, you can grow with the startup, and also you can make good amount of money. However, in the investment banking world or in the investment world, making money is easier said than done. So when you are investing, you also needs to be careful about where are you investing, what needs to be looked at, how do you ensure that as an individual or an individual investor, what are the things you need to look at, how you need to protect yourself as the company is growing or not, and how you ensure that the amount of money you have invested comes back to you multiplied by certain times. Sometimes the multiplication factor could be 2 times, 3 times, 4 times, even 10 times, even more also. But it's not so easy to achieve that until and unless you know what are the things to be looked at regularly from an investor protection side and continue the journey of making good money from your investment. So today I'm talking about the protection of investor interest related to investment in startups. So before I go into this, I think it's important that we talk about the status of the Indian economy and where it is today. As you know, Indian ecosystem is growing at a very fast pace. We have already reached a 8.5% growth in GDP. If you look at over the last 3 decades, it has been continuously growing. We are already a 3 trillion economy, and this growth is only possible when the drivers of growth from the government as also the private sector comes together, join in hand, and make this growth possible. Now, what are the different drivers of growth? If you see, one side, when we look at our economy, it has been a very large agrarian economy. We have been a growing nation over the years. And as we have grown, we have seen the public sector playing a massive role. But as we have grown to a level wherein we are recognized as one of the largest economies, we have to also think that along with public sector, the private sector has to grow very well. And with that intent, if you look at the entrepreneurship has being promoted strongly by the government, and the enabling ecosystem is being done in a very effort from the government and the industry together, which has seen that lot of new initiatives are being taken. To give a few examples today, if you look at all the engineering colleges have come up with what you call as the entrepreneurship cells. So earlier we used to think after you pass out, go to a college, go to a job, and then you think of entrepreneurship. But today I see that in the second year onwards, students are starting with different models of entrepreneurship. They want to be an entrepreneur when they are studying even. So things are changing. Today, I think the generation, the youth is actually becoming, a creator of lot of business opportunities and jobs at the college level itself. So that's how I think we are seeing a shift in the approach of entrepreneurship, which leads us to believe that the startup ecosystem will be growing in leaps and bounds. And government has been kind enough also to take a lot of initiatives. Like one of the big things to talk about is the different type of incubation cells which has been set up by government, different types of startup schemes wherein grants, loans, equity, and related support to help entrepreneurs, including mentoring support to grow them. Not only this, if you look at the 10,000 crores of startup fund of funds which has been set up by Government of India, that is actually also helping lot of early stage venture funds to set up shops so that they can support lot of entrepreneurship in India. Now, it is so pleasing to know that out of this almost 10,000 crore, I believe about 8,000 plus crores have already been committed, which itself is a big number. And that has actually resulted in a lot of flow of funds to the startup sector. Now, the
the way we are seeing unicorns in India, as you probably know, India has the highest number of unicorns, across the globe. And these are unicorns which has been made in the last few years. It's not that we have been running this journey for long. It's only in the last few years we have seen so many unicorns that has come up. Obviously, many of them are tech-led, but there will be a lot of them which are not even as much of tech-led as it looks today. There could be services, like if you look at, institutions like, Zomato, institutions like, Swiggy, the amount of employment it's creating is massive. So the faster they are growing, the more employment that is being created actually, is encouraging a lot of, professionals to come into the startup ecosystem. And that is pretty clear that, it's going to grow only. Now, in view of that, what has happened is earlier, if you look at only venture capital funds used to invest. Now, it has become a sort of norm to do a angel round. What I mean by angel round is very early stage capital raise, wherein individuals participate. They are called angels. So they come in. So which means that you and I today can become angel investors by putting in as small a token amount of say 1 lakh, 2 lakh to 5 lakh to 10 lakh. And you will be happy to note that many of these investments are generating return of 5x to 10x is in 1 year's time, because the market in India is massive, because investors are trying to back different type of entities today, and also the fact that India is a very large economy. And if you look at it, for the investors also, the global investors, it offers so much of opportunity, because today from a perspective of investment, China is restrictive. From a perspective of investment, the entire CIS, Ukraine, Russia going through war, investment opportunities are limited. If you look at the LATAM countries, Argentina or Brazil, they are fighting their own war in terms of their growth and other things. Not really a war, but I'm saying the challenges of growth, and the economy are in shambles. So where will the investor money go? So India is a very large market from that perspective, and we have picked up the growth rate pretty well. So keeping in view that, we are seeing tremendous amount of interest from individuals to come and invest very early. And the main focus of this program is to talk about what are the things you need to know before you invest, and how to protect yourself so that your investment remains sound, the investment grows and makes very healthy return for you. So now, first question comes, who backs you in the early days as an entrepreneur? We call 3 Fs, friends, family, and fools. And sorry to use the word fools, but why we say fools is because people who trust you in the beginning, because you are not yet started the business, or you are about to just start the business, or you have just started the business has not yet been established. So people who can back you are generally called that, friends or families who know you, and the fools who trust you. And here the fools are the angel investors. But effectively, if you look at it, they are the ones who make most of the money, right? Because they back the right entrepreneur at the beginning itself. So we'll go now deeper in terms of talking about what are the type of instruments through which the angels, investors or the individuals like you can invest today. Simply, there are not too many options. Actually, options are very limited. But then within the option, there are multiple other differentiators which come up. The two simple options, what we see today, are either equity or debt. When you talk of equity and debt, what are the difference? The major difference is equity is much more risk-taking ability of the investor. Debt is less risk ability, right? Second is debt has a fixed return. Equity return could be very high, very low, right? You are never sure of when you will get your money back. You are never sure of what time the money is going to come back. You are never sure that whether you will recover your principal or you will make a 10x. So it all depends on how the startup is functioning, right? So there is no fixed timeline. There is no obligation of payment from the company side. There is a huge risk associated, and obviously there are rewards. On the debt side, you are not taking huge risk. That's why rewards are limited. Rewards in the form of interest, and it is a different timeline, definitive timeline, which could be a year, 6 months, or 2 years, or 3 years, right? Depending on the requirement of the business. If I look into the equity, there are two basically instruments which are being used by whether it is a company or the investor who is investing the money. The most common, and we know in India, is called common stocks or ordinary shares. These are the simplest form, wherein like any public company you invest in, you basically buy their common stocks, right, in a listed entity.
Here also in a private company, you can buy a common stock. Now, common stocks are not so preferred by investors, and there is a reason for that. I'll come to that in a bit. Now, what happens is, as a common shareholder, you have voting rights. You can get your dividends if you want. If the company declares dividend, you will get your dividend, and you have the rights on the assets of the company. That's a normal definition. Now, coming to preferred stocks, this has always slightly different because it has a word preferred than the common stock. That means in case a company goes into liquidation, God forbid, it should not happen wherever you're investing, but you never know. Circumstance may happen that a company goes into liquidation or it winds down. You have a better right than a common stockholder on the assets of the company. That means in a liquidation system, the debt comes first, the debt lenders or the debt investors get their money first, then comes the preferred stockholders, they get their money, and whatever is left after that can be recovered by the common stockholders. So that's why most of the investment done in the startup, people prefer to do it through a preferred stock. And preferred stock can also be looked at from two different perspectives. One is that it could be a compulsory convertible, means that it has no choice but to be converted into equity after a certain period of time. But the company or the investor has an option not to convert it into equity and get the payment later on through an option of buyback or a redemption, right? So that's why it has an option. But compulsory means it has to be necessarily converted into a common stock after some time. Whereas optionally convertible can be returned back or can be converted based on the requirement of both parties. Now, coming to the most crucial part of this discussion. So we understood how we can invest either through a common stock or a preferred stock, or if it is a preferred stock, it could be a compulsory convertible preferred stocks or it is an optional convertible. But now comes the question of that if I become a partial owner of the company, how do I control the things what is happening in the company so that I know that my money is safe? When I say safe means it is really being utilized properly. It is being utilized for the purposes for which it is needed to grow the company, and it is able to help me or the company to generate returns for the investors, right? So if we look at from that perspective, we'll have to think how do we be a part of this process and ensure that we have certain control functions, right? As an investor, as an individual investor. Now, you can have it through a board controlled option. When I say a board controlled option, what I mean by that is whether you can be in the board of a company. Now, once you're in the board of the company, then you are part of all the deliberation that happens in the board. What are the documents being put up in the board, including information about how the company is doing, where they're spending money, are they really making losses? If the losses are there, how much is the loss? What are the type of gross profit margins they have? What is the EBITDA level? Are they growing but at efficiently over the last few months? So you have access to all the information and you can participate in the discussion and deliberation of the company to give inputs about what needs to be done, what should not be done, right? What you think out of your own experience. Now, there is a catch here. If you are a minority investor, if you are a small investor, let us say you hold only 2% of the company, maybe you will not get a board seat. Then you'll have to think collectively between 4 or 5 investors coming together, can you have a board seat? And then one of 5 or 6 together who hold say 5 or 10% or 15% can be representative in the board and take those calls or discuss all this or convey the view of all the investors together, right? So this is very important to understand why you need to have a board position if possible. However, there are other options which I'll come in a bit later. Now, even if you don't get a board position, still you can know what is happening in the company by participating in the board meeting. So say the threshold for being a board member is 5%, but you only have 4%. So you will not get a board seat. What do you do there? Then you negotiate with the founders or the promoters saying that, can I get an observer seat? Now, observer as such has no rights, but
He is part of the deliberations. He can take notes. He can, share his views beforehand and say what, these are the questions if you can address. He will know exactly what is the discussions happening in the board. So he or she will have really good access to what's happening and would know the company is going in the right direction or not, and if there are any inputs required to be given to the board or to the management so that the company is steered well and your investment remains protected and growing as well. So this is the way to go through a board approach. However, it's not always possible to have everything through board. As I said, it could be the percentage shareholding that you don't have to get into a board position, which is called a threshold shareholding, or even the company doesn't agree to give you an observer seat. Then how do you know about things? Now then you get into a shareholder agreement details to understand what are the different things you can get as an investor to know about the health of the company. So it could be your information rights. What I mean by information rights? That every month the MIS, which is the Management Information System, is being sent to you. MIS data is sent to you on a monthly basis, on a quarterly basis. And in quarterly, there is P&L, means profit and loss account and balance sheet, which is being sent to you so that you exactly know how the company is growing. You exactly know that what's happening in the institution. Are the gross profit margins increasing? Is the EBITDA looks healthy? Is the company in a path to profitability? Is there enough cash in the business, which is very important because the company has to grow if needs enough cash, or it is raising equity or debt. All those things are very clear, even to the extent if it's taken debt, whether it is heavily leveraged or not. So through the MIS, you can understand about the company and if need be, connect with the promoters or to the other shareholders together, and you can write to the company to say, hey, these are the things which worries us. Can you look into this? Can you tell me what are you doing? So that you are continuously giving inputs and trying to protect your investment, right? So that is very important to understand what happens in the shareholder agreement. What are the things through which you know what are the obligations and rights of the promoter, what they need to share as a company with you regularly, whether there can be investor call specifically which can be done on a quarter to update the investor about what is happening in the company, what are the corrective steps being taken if there are any challenges that the company is going through, and things like that. So it's very, very important to understand that. And then, there are other things like, which you can do either through a board position or through shareholder. Like say when you invest in a company, you betted on the two promoters, let us say A and B. The promoters are there, but all of a sudden it happens that A and B, A, who is the most, I would say, charismatic person who has been growing this company, decides to leave, or something happens, he will no longer continue. But you bet on that person, right? So he cannot just go away like that. It needs to be brought to the notice of the shareholders, taken their approval, and then only he can go, and we know who is the replacement. Is he competent enough? So the shareholders should know. So you either through a board, if you have a board rights, or through a shareholder, can control these things in the sense that you have been informed why he is leaving, what is the reason, is there a replacement available, and can we quickly get a right person who can lead this, and you are comfortable with that. Secondly, let us say change of business. You decided to fund a company for a business which is into, let us say, electric vehicles. And that has a huge potential because there are a lot of government subsidies, there are a lot of push by the government, there is a market which is accepting that. But all of a sudden they decided they will not do electric, but they will do fossil fuel driven vehicles. Again, that's not what you invested for. That was not your focus. Now, if they are changing, why they are changing? What is the reason? Is they not able to run this? Is there not enough demand? Why they are changing it? Then is there a way you can protect and say, hey, give me an exit before you change the business? Third could be like geographical expansion. Let us say, to give an example, the business you invested is about ice pops, and you are in southern India where hardly there is any winter. Let us say in Chennai. The business is in Chennai and Hyderabad, and it's about ice pops. And that will sell in summer and winter equally well. But assuming you want to expand in Shimla, whether it will sell? So the company may think differently. They say that no, softies sell in Shimla, so ice pops will also sell. But that may not be the case. So I think that's where you have to, as a shareholder, put your foot down or even ask the right question and say, you have to take my permission before you do that. Now,
Next point is, say you want to bring in new investor in the company. I mean, you means the promoters. In that case, what happens? The investor may be from real estate, which you are not comfortable with, right? It may be from some other sectors. So why you want to bring them? So you should have a say in that, right? Coming to change of auditors, you have supported the company because they were having a very good auditor. If the company is changing the auditor, what could be the reason? Is it that they are not comfortable with the auditor? Is it that the auditors are trying to disclose something which the management is not comfortable? That means, is there a problem in the company? So there may be some signs you will get when you ask this question. So these are the important points you need to know. Similarly, like when you get capital investments, right? Whether you need to get the equity or debt. Now, what is required at the point of the company? Equity is better or debt? See, if you bring in more equity, if the founders bring in more equity from investors, you as a shareholder gets diluted. But maybe they don't need so much equity right now. Maybe they can do with a combination of debt and equity together. So all these things are very, very important to understand, and you should have a right as a shareholder to get these things vetted by you and give the right input so that you can protect your investment. How to get an exit? And it is very important that you understand what an exit is and try to negotiate that. So I'll quickly run through this. The most common is secondary exit. Means as the company grows, it brings a new investor. So the early investor is exited by the second, third or fourth round. That's called secondary exit. So one investor is selling to the other in the next capital raise. The most common, people will say IPO, but it's not easy to do IPO. But IPO is also one of the common way to to exit. And the last but not the least is the strategic sell, which is we've seen a lot. And strategic sale is not from a larger competitors alone. It could also happen that some large entity sees you as a threat. That means, say you are building chips and there is a big entity which also makes chips, but your chips are becoming low cost and very efficient. Now, either they take it and run that business, or they want to kill the competition because their brand is getting impacted. So they will buy it and kill it inside. So there are three different ways of looking at strategic, right? So it depends on what approach the buyer takes. Okay, through that also you can get an exit. There's also another option wherein, especially for early stage investor, you need to figure out a way to exit through a buyback. Not a very common part, but buyback can be done. Regulations are very strict in that you can't do more than 25% in a year. It has to be only done through reserves and surplus. And if the company doesn't have enough reserves and surplus, it's very difficult to do a buyback. But obviously promoters, if they're rich, they can do a buyback. So always try to, as an individual investor, try to see if there's a way you can do a buyback. And you can also have a minimum contracted IRR if you want. That's also very important as an early stage because you're taking huge risk. You should have a minimum defined IRR. If possible, negotiate that. Coming to the last part is that whatever way you do, it's more important that you understand that this is a risky bet. Any investment you take or you make on any startup is a risky bet. And you should think all possible ways to see how you can protect yourself from the company not going in different direction which you didn't want to invest in the first place itself, for which it was being set up, then it is going in a different direction. 2, you have to always ensure that your rights are protected. Means you can look at the company's growth, you can take a call on what's happening right or wrong, and you have a say in that. So that can be through the shareholder agreement, as I said. It could be also through board rights. Both are important. Third is, and the last and most important part is, you should always think of how do you structure your exit. Be very, very clear. Don't keep it very open. I know it's not easy to exit a startup, but you should try to have as much of protection. And one thing I want to highlight here, which is very important for you as a minority shareholder, that please ensure that any other larger shareholder exiting the business, or even the promoter exiting the business, you should have a right to tag. What I mean by that is, you should tag along with that investor or the promoter if they're exiting a business. The promoter cannot exit till you are there. So it's very clear from that perspective, right? So I think these are the few things I wanted to share. Very happy to help you whenever you want. Having raised, more than 25,000 crores of equity and debt over the years, we are always there to help. And as an investment banker, I always think that we should give as much information for a shareholder to know what they need to know before they put in money. Thank you, Namaskar, and Jai Hind.
क्रिटिकल है, बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। Today I'll be making a presentation on the fundamental analysis of securities. जब हम डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, which implies that we are going to purchase shares, तो हमें पहले ये तय करना होता है कि शेयर खरीदने लायक है कि नहीं। So this presentation is going to be all about how to find out what is the value of share and is it worth purchasing or not. There are two broad aspects how we evaluate and analyze the investment decision related to securities market. The initial one is carrying out fundamental analysis, which we are going to focus on today, and the second one is the technical analysis. So we would be focusing on fundamental analysis today. As part of fundamental analysis,
what we do is we carry out broad evaluation of global economy, of macro economy, और वस्तुतः एक्चुअली हम जानना ये चाहते हैं कि जो हमारे इकोनॉमी में हो रहा है इस शेयर से संबंधित वो सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, उस शेयर और उस कंपनी का और उस इंडस्ट्री का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो कितना सही है। अगर हम ये जान पाएंगे तभी फिर हम ये डिसाइड करने की स्थिति में होंगे कि ये शेयर इन्वेस्ट करने लायक है। So what we do is we carry out fundamental analysis, and there are frameworks for carrying out fundamental analysis. Before we do that, I would like to explain a bit about fundamental analysis, what it tries to do, and how we actually carry out the fundamental analysis. So fundamental analysis particularly aims to determine prospective benefits or values from investment in a security, specifically keeping in mind the condition under which they may be received and the likelihood of emergence of such conditions. So कहने का ये मतलब कि जब हम शेयर कोई खरीदते हैं उसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, उस वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स के कुछ एजम्पशंस और पैरामीटर्स हैं, वो एजम्पशन और पैरामीटर्स चेक करने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हम कोई शेयर खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई XYZ शेयर है, उसका दाम आज के डेट में मान लीजिए 100 रुपये है, क्या 100 रुपये में ये खरीदने लायक है? उस दिन का जो शेयर है उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट या करंट प्राइस। एक जो और अंतर्निहित चीज़ होता है उस शेयर के वैल्यू से रिलेटेड, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है क्या उसका अंतर्निहित वैल्यू है। उस इंट्रिंसिक वैल्यू का एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तब फिर डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली ये खरीदने लायक है कि नहीं। और मोटे तौर पे जो आइडिया होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू का होता है कि अगर किसी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मान लीजिए आज के दिन में XYZ शेयर का दाम 100 रुपये है, लेकिन हमने कैलकुलेशन किया, इवैल्यूएशन किया, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकला 150 रुपये, तो ये हमें ये सूचित करता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि एक्चुअली ये शेयर 150 रुपये का होना चाहिए लेकिन आज 100 रुपये का है, तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि ये शेयर खरीदने लायक है। वैसे ही अगर हम जानते हैं और इवैल्यूएशन के बाद ये पता लगता है कि इस शेयर का दाम एक्चुअली आज के डेट में तो 100 रुपये है लेकिन होना चाहिए इसका दाम 50 रुपये, तो ये दिखाता है कि ये शेयर एक्चुअली रिस्की प्रोपोजिशन है, तो वैसे शेयर का इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ये ओवर आर्टिंग थीम है फंडामेंटल एनालिसिस का। सो जब हम एक बार ये कर लेते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे मॉडल है, लेकिन जो बेसिक मॉडल है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का वो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड उसको बोलते हैं। और उस मेथड में क्या करते हैं, एक जो आपका कोई भी शेयर खरीदते हैं, शेयर से रिटर्न दो तरीके से मिलता है। एक शेयर से शेयर में आपने इन्वेस्ट किया तो उससे डिविडेंड कितना मिल रहा है, और दूसरा जिस अवधि के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उस अवधि के अंत में उसका वैल्यू कितना है, तो बेचने से आपको कैसा पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है। सो इन दोनों चीज़ों को लेकर मॉडल्स बने हुए हैं अलग अलग, और उस मॉडल को बेसिकली हम यूज करके किसी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू करते हैं। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। जो डिविडेंड है अगले साल मिलना है, उसके अगले साल मिलना है, उसके अगले साल मिलना है, उसको एक्चुअली कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट जो इन्वेस्टर डिटरमिन करता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट से उसको डिस्काउंट करते हैं, और जो वैल्यू निकलता है वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो वो हमारा आज के डेट में कितना दाम है वो पता लग गया, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसा है कितना होगा वो पता लग गया। अब इनके बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का। जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस करने के तरीके हैं वो दो ब्रॉड फ्रेमवर्क है ऑफ मेकिंग और कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस। इसको बोलते हैं एक EIC फ्रेमवर्क और एक CEI फ्रेमवर्क, CIE फ्रेमवर्क। सो EIC फ्रेमवर्क हम इस प्रेजेंटेशन के लिए EIC फ्रेमवर्क यूज करेंगे, और EIC फ्रेमवर्क बेसिकली तीन ब्रॉड थीम्स से बना हुआ है। E stands for economic analysis, I stands for industry analysis and C stands for company analysis। तो इस EIC मॉडल को यूज करके हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के बारे में समझ अपनी बनाएंगे। पहला स्टेप होता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, जो ब्रॉडर इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं वो हमारे फिस्कल पॉलिसी, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और ये तय करने का कोशिश करते हैं कि इकॉनमी का ओवरऑल कैसा फ्यूचर है,
क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये बेहतर स्थिति में रहेगी, क्या ये ठीक स्थिति में रहेगी, या क्या इसकी स्थिति खराब होने वाली है। अब ये नॉर्मल प्रोजेक्शन तो हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अनयूजुअल एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेज आ जाते हैं। जैसे हमारा पहले से 2 साल पहले 2020 मार्च तक की कहानी थी कि इंडियन इकोनॉमी बूम करने वाला है और ग्लोबल इकोनॉमी भी अच्छा होने वाला है, बट ऑल ऑफ ए सडन पैंडेमिक आ गया, कोविड रिलेटेड इन्फेक्शन पूरी दुनिया भर में फैल गया, जिसके चलते कि बहुत सारे देशों के जो इकोनॉमिक आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो गड़बड़ हो गई और इंडिया वाज आल्सो इम्पैक्टेड निगेटिवली। सो कहने का ये मतलब कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करके समझने का कोशिश करते हैं, बट वी आल्सो नीड टू बी माइंडफुल ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस विच कुड एक तरह से हमारा जो खेल है वो बिगाड़ सकता है। सो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, जैसा मैंने चर्चा किया पहले, द फर्स्ट स्टेप इज कैरिंग आउट इकोनॉमिक एनालिसिस। और इकोनॉमिक एनालिसिस में हम डिसाइड करते हैं मैक्रो इकोनॉमी लेवल से, ग्लोबल इकोनॉमी पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक देखते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स देखकर जो मोटे तौर पे हम जानना चाहते हैं, जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था का, जैसे इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसे होने वाला है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो कैसा होने वाला है। इन्फ्लेशन जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। वैसे ही इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कैसा होने वाला है, बढ़ने वाला है, घटने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करता है एक्चुअली पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोग लोन कम लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन कम लेगा मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, करंट एक्सपेंडिचर कम होगा, जो कि उनका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट करेगा। वैसे ही गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनका बजट का सिनेरियो कैसा होने वाला है, बजट डेफिसिट होने वाला है या बजट सरप्लस होने वाला है। बजट सरप्लस होने का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी, वो चाहे राज्य का हो या देश का हो, वो इम्पैक्ट करता है कि उनके पास कितना लेवरेज है, कितना उनके पास खर्च करने के लिए स्कोप है। आज के ज़माने में तो आप लोन भी लेकर, आपको पता होगा अलग अलग राज्यों का रेशियो ऑफ क्रेडिट और लोन टू इट्स रेवेन्यू वो अलग अलग है, लेकिन जितना कम होगा लोन उतना ही अधिक स्कोप रहता है कि आप और लोन ले सकते हैं, उस लोन की चुकौती करने में आसानी होगी और उतना ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनालिसिस में करते हैं। अब ये इकोनॉमी का ब्रॉडर फ्रेमवर्क करने के बाद बिजनेस एनालिसिस करना पड़ता है। बिजनेस एनालिसिस में फिर हम वो देखते हैं कि इंडस्ट्रीज या सेक्टर, वो सारे मोटे तौर पर अगर आप ये देखें तो हमारा इकोनॉमी 3 भागों में विभाजित है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, और टर्शियरी सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर। सो हम इन तीनों सेक्टर का एनालिसिस करते हैं और तब फिर पता करते हैं कि बिजनेस कैसा रहने वाला है। हमें वो भी देखने के लिए मिलता है कि ग्रोथ बेस्ड इंडस्ट्रीज कंपनीज कैसे होने वाले हैं, जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री का नेचर कैसा होना है, इकोनॉमी और बिजनेस साइकिल पर कितना डिपेंडेंट है। उससे हमारा तय होता है कि बिजनेस साइकिल में कौन से डिफेंसिव इंडस्ट्रीज रहने वाले हैं, कौन से साइक्लिकल इंडस्ट्रीज रहने वाले हैं। इस एनालिसिस की महत्ता तब समझ में आती है जबकि एक्चुअली इकोनॉमी ऊपर नीचे होने लगता है प्रोजेक्शन लेवल से जाके। एक बार हमने बिजनेस एनालिसिस कर लिया और वो तय कर लिया कि बिजनेस मैक्रो इकोनॉमी देख लिया, ग्लोबल इकोनॉमी पहले देख लिया, फिर मैक्रो इकोनॉमी देख लिया, फिर उसके बाद बिजनेस एनालिसिस कर लिया, बिजनेस साइकिल का कर लिया। उसके बाद फिर देखते हैं हम क्या कि स्टॉक मार्केट का क्या स्थिति रहने वाली है। स्टॉक मार्केट आपको जैसा पता होगा दैट इज़ द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ, और जो किसी भी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है वो रिफ्लेक्ट होता है स्टॉक मार्केट के स्वास्थ्य से। सो स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट इन असेसिंग द मार्केट इज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक फैक्टर्स विच डिटर्मिन एक्चुअली द स्टॉक प्राइसेज। इस तरह से स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। और एक अभी रिसेंटली मैंने एक्चुअली एक रिसर्च किया था, आपको पता होगा जैसे कोविड काल में क्या हुआ था, इकोनॉमी टेक्निकली रिसेशन में चला गया था भारतीय अर्थव्यवस्था, और बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे भी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में चली गई थी। लेकिन हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था रिसेशन में जाने के बावजूद जो हमारा स्टॉक मार्केट था वो बूम कर रहा था। तो ये हमने जानने का कोशिश किया कि क्या इश्यूज है जो कि इस तरह के क्रॉस फंक्शनल हमें मैसेजेस दे रहे हैं, और उसका वो आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो उसे स्टडी का एनालिसिस मिलेगा।
ये बताने की कोशिश हो रही है कि एनालिसिस करते समय बहुत आयामी परिप्रेक्ष्य रखकर एनालिसिस करने की जरूरत होती है, ताकि हम फंडामेंटल एनालिसिस का कंसेप्ट ठीक से समझकर एनालाइज कर सकें। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, इंडस्ट्री एनालिसिस आते हैं, जो कि सेकंड स्टेप है। जब हम कन्विंस हो गए कि इकोनॉमी ठीक ठाक है, मार्केट भी ठीक ठाक है, तो एज एन इन्वेस्टर वी शुड कंसीडर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रॉमिस मोस्ट अपॉर्चुनिटीज इन द कमिंग ईयर्स। उसके लिए इंडस्ट्री एनालिसिस करना महत्वपूर्ण होता है। सो हम इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए फिर अलग अलग मॉडल्स हैं, और इंडस्ट्री एनालिसिस करने के पहले इस किसी भी इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इवेलुएट करते हैं वो होते हैं कि इसका, इस इंडस्ट्री का पहले का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आज के डेट में कैसा है, और इन दोनों पे बेस करके हम फिर इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो इन इंडस्ट्री के एनालिसिस के मॉडल्स को यूज करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पे 3 ब्रॉडर मॉडल यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए। एक तो है कि पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल होता है, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू होता है 5 फोर्सेज मॉडल में कि नए एंट्रेंट जो होने वाले हैं, नए जो प्लेयर्स हैं वो इंडस्ट्री में घुसेंगे तो उनसे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। फिर क्या है कि उस इंडस्ट्री में जो कस्टमर्स हैं उनका कितना पावर है, वो कितना उनको डिटर्मिनेशन है कि वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर है पावर ऑफ सप्लायर्स, जो सप्लाई करते हैं इस इंडस्ट्री को। और अंत में है कि इस इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें बन रही है या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसके सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं, व्हाट इज द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। इसी तरह से दूसरा मॉडल होता है पेस्ट मॉडल। तीसरा मॉडल एक होता है सोट एनालिसिस करने का। सोट बेसिकली एक एक्रोनिम है जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट करते हैं। तो इस तरह के मॉडल्स को यूज करके हम इंडस्ट्री का एक एनालिसिस करते हैं समझने के लिए। एक इंडस्ट्री में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल भी इवैल्यूएट एनालाइज करते हैं। आपको पता होगा बेसिकली 3-4 इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल होता है। एक तो जब शुरुआत होता है तो वो पायनियरिंग स्टेज होता है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन स्टेज होता है, फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन स्टेज होता है। इन स्टेजेस का एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि कौन सा एनालिसिस में किस तरह का रिटर्न मिलता है और हमारा रिस्क परसेप्शन कैसा है। जैसे कि पायनियरिंग स्टेज है, उस स्टेज में रिस्क बहुत अधिक होता है, लेकिन अगर आपने सही इंडस्ट्री चुन लिया और उस इंडस्ट्री में सही कंपनी चुन लिया तो फिर आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस करने के फायदे होते हैं और इसलिए इन इंडस्ट्री एनालिसिस को महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि अच्छा ये इंडस्ट्री तो बहुत दिन से चल रहा है, अब इस इंडस्ट्री का सब्स्टिट्यूट आने वाला है और इस इंडस्ट्री का जगह कोई और इंडस्ट्री लेने वाला है, वो दिखाता है कि इस इंडस्ट्री का डिक्लाइनिंग स्टेज हो गया। अगर आप इस तरह का कर्व देखेंगे तो कर्व एक नीचे की तरफ आने लगा है। वो अगर नीचे की तरफ डिक्लाइन स्टेज आने लगा है तो वो नॉर्मली एक इन्वेस्टर के लिए इंडिकेशन है कि इस इंडस्ट्री में आप मत इन्वेस्ट करने का सोचिए। वो एक हमारा रेड फ्लैग होता है। इंडस्ट्री एनालिसिस करने के बाद फाइनल स्टेज आता है कंपनी एनालिसिस। अब कंपनी एनालिसिस करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ध्यान में रखें कि वैसे कंपनी को चुने जिनका कि इतिहास ठीक रहा हो और जिनका कि फ्यूचर भी अच्छा होने वाला हो। तो ये कंपनी एनालिसिस करने के लिए फिर हम 2 ब्रॉड थीम्स पर एनालिसिस करते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं उस कंपनी का, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एनालिसिस, और दूसरा नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस। इन दोनों चीज़ों को यूज करके हम किसी कंपनी के बारे में ये निर्धारित करते हैं कि ये कंपनी का शेयर खरीदने लायक है या नहीं है। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बेसिकली हमें वो बताते हैं कि किसी भी समय में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या स्थिति है और ओवर द पीरियड क्या स्थिति होने वाली है। तो जैसा हमें पता होगा, जब किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ब्रॉडली 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। एक बैलेंस शीट होता है जो कि एज ऑन डेट होता है, किसी भी एक दिन को होता है, जैसे 31 मार्च जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस दिन का बैलेंस शीट कैसा है। और इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनता है जो कि किसी अवधि के लिए बनता है, किसी फाइनेंशियल ईयर या किसी महीने का या किसी तिमाही का, किस तरह का वो इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बना है जिससे कि पता लगता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। और फाइनली इन दोनों पर बेस करके हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है जिससे कि पता लगता है, जो पहले हमने डिस्कस किया था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उसी तरह का
हमारा कैश फ्लो डिस्काउंट मॉडल भी यूज़ किया जाता है बहुत बारी वैल्यूएशन के लिए, स्पेशली इन द स्टार्टअप सेक्टर। सो हम ये एनालाइज करके ये डिसाइड करने की स्थिति में पहुंचते हैं कि ये कंपनी का शेयर है कैसा। अब ये तो हो गया फाइनेंशियल। हम फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखने की ज़रूरत होती है। नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में बेसिकली वो देखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं निकल के आते हैं, जैसा मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है और कैसा होने वाला है, इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज भविष्य में उनका क्या स्कोप होने वाला है। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे आपको पता लग रहा होगा ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जो कंपनीज हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या आज के मौजूदा के हालात में इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिलेटेड इंडस्ट्री जो है और उसके जो कंपनीज है उनकी स्थिति ऐसी समझ में बन रही है कि इनका भविष्य अच्छा होने वाला है। तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम कंपनीज को इवैल्यूएट और एनालाइज करें, उनके फाइनेंशियल्स नॉन फाइनेंशियल्स देखें और तब फिर डिसाइड करें कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन से कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है। सो जो कंपनी एनालिसिस का हम करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स, उसमें बेसिकली रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। रेशियो एनालिसिस कितने तरह के हो सकते हैं? बहुत तरह के रेशियो एनालिसिस होते हैं। और हम जैसे एक बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है कि कोई कंपनी किसी डेट में जब हम उस कंपनी का शेयर के बारे में डिसाइड करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखते हैं कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट का कमाई का इवैल्यूएशन के लिए हमें ये ध्यान में रखने की चीज़ है कि ये अपने आप में 10 करोड़ है या 100 करोड़ है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका रेशियो देखना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे 100 करोड़ अगर कमा रहा है कोई प्रॉफिट और अगर 1000 करोड़ का उसका टर्नओवर है और दूसरी कंपनी एक है कि 1 करोड़ कमा रही है और उसका टर्नओवर 2 करोड़ है, तो ऑब्वियसली आपको पता लगे कि एज ए रेशियो जो 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है वो किसी हद तक इस रेशियो एनालिसिस पर बेहतर परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो जब 1000 करोड़ का टर्नओवर पे जाएगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कि 500 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। 500 करोड़ नहीं तो 200-300 करोड़ तो पहुंच ही जाए एज कम्पेयर टू 100 करोड़ जो कंपनी 1000 करोड़ कमा रही है। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी देखना होता है। इसी तरह से हमारे और भी रेशियोज होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो होता है, अर्निंग्स पर शेयर का रेशियो होता है, डिविडेंड कवर, अर्निंग्स प्राइस रेशियो, मार्केट यील्ड, ये सारे होता है। एक जो प्राइस पी रेशियो बहुधा यूज होता है वो हमारा यूज होता है कि हमारा आज के डेट में शेयर का प्राइस क्या है और उस कंपनी का किसी डेट में अर्निंग्स कैसा रहा है। तो वो एक पीई रेशियो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है उस कंपनी का बताने के लिए कि ये इस कंपनी का शेयर है कैसा है। मोटे तौर पर ये समझा जाए कि जिस कंपनी के पीई कम है वो अधिक इन्वेस्ट करने लायक है एज कम्पेयर टू एन शेयर ऑफ अ कंपनी विच हैज हायर पी रेशियो। बट ये केवल एक पहलू है। इस पी रेशियो के अलावा और भी बहुत सारे रेशियोज देखने होते हैं जो कि उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया। दूसरा एक और चीज़ देखते हैं हम कि लिवरेज रेशियो कैसा। लिवरेज रेशियो कहने का ये मतलब कि किसी कंपनी ने, मान लीजिए अब किसी ने कंपनी शुरू किया, उसने अपना शेयर होल्डिंग फंड लगाया 1 करोड़ रुपए। उस 1 करोड़ रुपए पर कितना उसने फंड रेज किया हुआ है थ्रू क्रेडिट और थ्रू लोन, वो हमारा डेट इक्विटी रेशियो से एक तरह से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है कि जितना अधिक कंपनी का डेट होगा उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा उस डेट का सर्विसिंग के लिए। जैसे आपने लोन लिया हुआ है तो लोन का चुकौती करने के लिए, उसका ब्याज देने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी कंपनी जिसने लोन नहीं लिया हुआ है उसको उतना कम खर्च करना पड़ेगा। तो जिस कंपनी का लोन कम है, डेट इक्विटी रेशियो कम है, वो उतना ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है उस कंपनी का शेयर। और होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में एक इंपॉर्टेंट रेशियो है करेंट रेशियो करके। करेंट रेशियो बेसिकली हम वो देखते हैं कि टोटल करेंट एसेट और टोटल करेंट लायबिलिटीज का रेशियो क्या है। ये हमारा वो दिखाता है कि अगर ज़रूरत पड़ी आज के डेट में, हमारा करंट लायबिलिटी है जो देनदारी है आज के दिन में, उसको अगर देना है तो उसको कवर करने के लिए हमारा आज के डेट में एसेट कैसा है, करंट एसेट कैसा है। इसको ये जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर स्थिति की कंपनी है और उस कंपनी का शेयर उतना ही बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा और एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेशियो होता है जिसमें बेसिकली हम एसेट टर्नओवर देखते हैं, या हमारा उसमें फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हो सकता है या टोटल एसेट टर्नओवर हो सकता है। हमारा जो रिसीवेबल है वो कितने दिन में एक्चुअली रिसीव हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये दर्शाता है कि कंपनी कितना
इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। और जो कंपनी जितना एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है, ऑब्वियसली वो कंपनी उतना अच्छा काम कर रही है और उससे कमाने के लिए इन्वेस्टर को उतना बेहतर स्कोप है। इन सारे रेशियोज को अगर हम देखना चाहें तो एक मोटे तौर पर जो कुछ रेशियोज होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक बेसिक रेशियोज होते हैं जो कि आपको बहुत सारे रेशियोज को कंबाइन करके इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो इन ऐसे रेशियोज को ध्यान में रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स को अपने आप में समाहित किए हुए होते हैं और इनको क्लोजली मॉनिटर करने से हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। ये तो हो गया फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अब इसके अलावा हमारे नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखने उतने ही जरूरी होते हैं। नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या देखने होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा किया, इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, बिजनेस कैसा है आज के डेट में और इस कंपनी का बिजनेस कैसा होने वाला है फ्यूचर में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका बिजनेस कैसा होने वाला है ये उस पर भी निर्भर करता है कि इसका प्रोडक्ट लाइन कैसा है, इसका जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफरिंग्स है उसका पोटेंशियल ग्रोथ कैसे होने वाला है। आज किसी डेट में जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि इस कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है। मार्केट शेयर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए होता है कि जो कंपनी, जैसे उदाहरण के लिए पूरा का पूरा मार्केट का वो अगर 90% कवर किए हुए है, वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो महत्वपूर्ण स्थिति में है डिक्टेट करने के लिए अपना प्राइसिंग, अपना पोजिशनिंग। और जिस कंपनी का मार्केट शेयर नगण्य है, जैसे कि उस तरह के कंपनी भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जिसका मतलब है कि उसे प्रॉफिटेबिलिटी कमाने का और इन्वेस्टर को रिटर्न हासिल करने का स्कोप उतना ही कम है। उसी तरह से फिर ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट कैसे हैं, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तरीका होता है कि इस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बारे में हासिल किया जाए। आप एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे किसी कंपनी के कि एनुअल रिपोर्ट में सीईओ का या मैनेजिंग डायरेक्टर का उनका स्टेटमेंट आता है। उससे पता लगता है कि मैनेजमेंट का क्या फोरसाइट है, क्या वो प्लान कर रहे हैं और वो कैसे प्लान कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि मैनेजमेंट ने पहले कैसा काम किया हुआ है, वो कितना डिलीजेंट है, कितना उन्होंने ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ काम किया हुआ है। आपको पता होगा जैसे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू पॉन्जी स्कीम्स। बहुत कमाल के कंपनीज थे विगत में और कंप्यूटर सेक्टर और भी सेक्टर्स में थे, जिनका कि बाद में पता लगा कि एकाएक एक्चुअली द अकाउंट्स वेयर नॉट मेंटेन्ड एज दे शुड हैव बीन, और जिसके चलते कि क्या हुआ, एक बोलते हैं जिसको कि कुकिंग ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स हो रहा था, जितना प्रॉफिट या जैसी स्थिति थी वो नहीं हो रही थी। तो इससे पता लगता है कि मैनेजमेंट की मिली भगत के बिना ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है। तो अगर आप मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें पहले ही पता लग सकती है, और अगेन इट विल रेज अ रेड फ्लैग फॉर द इन्वेस्टर कि ऐसे कंपनी से या ऐसे मैनेजमेंट द्वारा संचालित कंपनियों से दूर रहें। और कंपनी का नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स जब देखते हैं तो हमें वो भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क्या इसके प्रोडक्ट रेंज है, कितने प्रोडक्ट रेंज है। जैसे एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप एज सच अगर आप देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियाँ हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, और उन सारे कंपनीज का अगर आप इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे तो वो देखेंगे कि एक कंपनी भी एक प्रोडक्ट बनाती है, उस लाइन ऑफ प्रोडक्ट में भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज होते हैं। वैसे ही जैसे मान लीजिए एक सरकारी कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ओएनजीसी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, लेकिन वो कैसे नॉर्मल बैंकिंग से क्या बैंक इंश्योरेंस में जा रहा है, और वो क्या डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड सर्विसेज ला रहा है, वो सारी चीज़ें देखना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से यह और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर को देखते हुए हम इस मुकाम पर पहुंचे कि एक वृहद कंसेप्ट हमारा बन रहा है, और अंत में वृहद कंसेप्ट बना के सारे इम्पैक्ट्स इश्यूज एनालाइज करके हम इस स्थिति पर पहुंचे कि इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। क्योंकि जैसा मैंने पहले चर्चा किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का महत्वपूर्ण और एंड रिजल्ट होता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अधिक है तो कंपनी खरीदने लायक है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं अधिक है स्पॉट मार्केट से या करंट प्राइस से तो नहीं खरीदने लायक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और इसको हम हासिल कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा। आपसे यही अनुरोध होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस की बारीकियों को समझे और कोई भी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन करने से पहले इसको ठीक से कार्यान्वित करें। इसके साथ ही
मैं ये कार्यक्रम समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Program. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. The school also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of IGNOU. For more detail, please log in to IGNOU website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of IGNOU. So please join these programs and fulfill your educational aspiration. We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing
the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10 plus 2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. नमस्ते। ज्ञान दर्शन के सभी दर्शकों को वैदिक अष्टांग योग के तरफ से शुभकामनाएं और आज आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो विषय है वह है स्ट्रेस, तनाव, कि आप तनाव से कैसे योग और प्राणायाम के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम तनाव पर बात करेंगे कि तनाव क्या है और तनाव किस कारण आते हैं, उसको कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे और इसका उपचार योग, प्राणायाम, आसन, खान पान, इसके ऊपर आपको कुछ मैं अपना विचार बताऊंगा, अपना अनुभव बताऊंगा और लोगों का कि किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं तनाव के ऊपर। तो देखिए, आज के समय में तनाव लोगों के लिए बहुत ही सामान्य सा अनुभव बन गया है, जो कि अच्छी संख्या दैहिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। आज के समय में जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एम बनाता है, एक टारगेट बनाता है और उसमें बहुत सारा कभी कभी रुकावट आ जाती है। और जब वो रुकावट आ जाती है, जब उसका व्यक्ति सामना करता है और जब वो पूरा नहीं हो पाता है, तब व्यक्ति को तनाव से वो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, यानी तनाव उसको घेर लेता है। अक्सर व्यक्तियों में ऐसी स्थिति में अक्सर व्यक्तियों में द्वंद्व की अवस्था हो जाती है। द्वंद्व मतलब दो अवस्था हो जाती है और व्यक्ति के अंदर निराशा की भावना पैदा होने लग जाती है। और जब ये निराशा लगातार लंबे समय तक जब रहती है तो ऐसे व्यक्ति में तनाव या डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है। जैसे आज जो भौतिकवाद है, आज के सुख सुविधाएं, भाग दौड़ की जिंदगी, औद्योगिक जैसे काम का प्रेशर, जैसे संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, अब संयुक्त परिवार नहीं है। केंद्रीय परिवार जैसे ग्रामीण जनसंख्या जो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय मानव असुरक्षा और कमजोरी उजागर किया जा रहा है, वहीं उसके विपरीत औद्योगिक पक्ष में अभाव में जटिल सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पक्ष का असर मानव मन में तनाव के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक पक्ष से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है कहीं न कहीं। तो ये सब क्योंकि जब व्यक्ति के पास काम की कमी हो जाती है,
परिवार जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे उसमें आपके पास दादी है, दादा है, ताऊ है, ताई है, वो सब चीज़ गांव में मिलते हैं जो कि अब शहर में नहीं है, और उससे बच्चों का भी परवरिश उस तरह नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे कहीं ना कहीं उस तरह से सामाजिक परिवेश में नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों में भी तनाव का, या जो आजकल एंकल परिवार है जो शहर में होते हैं, मेट्रो सिटी में होते हैं, वो लोग अपने जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं काम के साथ साथ उनको तनाव से वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। आइए बात करते हैं कि जब व्यक्ति को लंबे समय तक जब तनाव होता है, तो तनाव जब होता है लंबे समय तक, तो किस रोग से वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि ये जो तनाव है ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो आज के समय में जो मेट्रो सिटी में, जो शहरों में देखा जा रहा है, जैसे उच्च रक्तचाप, जो हम बीपी, जिसको आज हर तीसरे चौथे व्यक्ति को शहरों में बीपी की शिकायत, यानी 50-60 जैसे हुए और उनको उच्च रक्तचाप की समस्या होने लग गई है। मधुमेह, हर चौथे पांचवें व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है, क्योंकि आपका जब स्ट्रेस, जो तनाव लेवल है, जब आपके मस्तिष्क में जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पेनक्रियाज को आपको प्रभावित करते हैं और फिर वो रोग में परिवर्तित हो जाते हैं। मोटापा, ओबेसिटी, आप देखेंगे कि ये भी तनाव का ही संबंधित ये रोग है। जब व्यक्ति तनाव होता है, जब व्यक्ति ज़्यादा, तो वो उसको मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है, यानी वो मीठा खाना लगता है, मीठा जब खाता है वो, तो उसके अंदर मोटापा बढ़ने लग जाती है। और जो व्यक्ति तनाव होता है वो ज़्यादा ही खाना पसंद करता है, वो कितना खा रहा है उसको पता नहीं चलता, खाता चला जाता है, तो मोटापा। हृदय रोग, जो जब स्ट्रेस होते हैं तो आपके ब्लड के सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं इसके प्रभाव होते हैं, तो इससे संबंधित आपको हृदय, हार्ट की समस्या होने लग जाती है। और जब ज़्यादा समय तक आपके तनाव होंगे तो इससे आपके पेट की समस्या हो जाती है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल अनियमित हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। यदि हम इसका बात करें इसको कि तनाव के रूप में, तो इसको आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद के विषय, आयुर्वेद के तरीके से हम लोग समझते हैं। आयुर्वेद में 3 चीज़ होते हैं, देखिए, वात, पित्त और कफ। जो वात होते हैं, वात यानी जब वायु, तो जो व्यक्ति वात से प्रभावित होता है, तो वात से जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो बहुत जल्दी तनाव से प्रभावित हो जाता है ऐसे व्यक्ति। और जो व्यक्ति बहुत जल्दी तनाव से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसके वात है, वायु है ना, बहुत ज़्यादा शरीर में जब बनते हैं, तो जैसे जो वात है वो इधर उधर जब भ्रमण करते हैं, जब इधर उधर भागते हैं, जैसे गैस एक जगह स्थिर नहीं होती है, तो वो व्यक्ति भी जो वात से प्रभावित होता है वो व्यक्ति भी तनाव बहुत जल्दी उसको होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो हमारे आमाशय है इसमें अल्सर की शिकायत होती है। जो वात प्रवृत्ति वाले, यदि वैसे व्यक्ति तनाव में ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो उनको अल्सर की शिकायत होती है, या उनको कहीं ना कहीं थायराइड की इसको प्रॉब्लम हो जाती है, यानी आपके जो थायराइड ग्रंथि है वो आपके अनबैलेंस हो जाते हैं। तो जो वात से प्रभावित, उनको ये रोग हो सकते हैं, आमाशय का अल्सर हो सकता है, या तो उसको थायराइड हो सकता है। तो आप देखेंगे। और जो पित्त वाले हैं, पित्त जो प्रकृति वाले होते हैं, वो व्यक्ति बहुत जल्दी वो क्रोधी स्वभाव होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव वाले होते हैं, गुस्साला बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो व्यक्ति पित्त से प्रभावित है, और पित्त से प्रभावित व्यक्ति यदि तनाव में ज़्यादा दिन तक रहता है, क्योंकि हम तनाव के यहाँ पर बात करें तो हम वात पित्त कब को इससे जोड़ रहे हैं, तनाव से, कि तनाव से जो व्यक्ति प्रभावित है और वो पित्त प्रकृति वाले, क्योंकि 3 प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो पित्त से प्रकृति से प्रभावित है और तनाव में यदि ज़्यादा दिन होंगे, तो उन व्यक्तियों को बीपी यानी उच्च रक्तचाप, जो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे कि तनाव से जो जनित यानी तनाव से संबंधित कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो हम बात करते हैं इससे बीपी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसको पित्त प्रकृति वाले, उसको उच्च रक्तचाप और हृदय का रोग यानी हार्ट अटैक की जो समस्या होती है वो पित्त वाले को ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कफ की। तो कफ प्रकृति वाले जो होते हैं उनके वो सुस्त होते हैं, शांत विचारधारक होते हैं। परंतु यदि कफ प्रकृति वाले को ज़्यादा दिन तक यदि तनाव हुए, तो उन व्यक्ति को तनाव से संबंधित यदि रोग होते हैं, उसको ज़्यादा दिन तक तनाव बना रहता है, स्ट्रेस रहता है उनको
काम की वजह से या जिसकी वजह से हो, तो उनको एलर्जी की समस्या मिलेंगे, उनको दामा बहुत जल्दी हो सकते हैं, या उनको गठिया का रोग होगा, इनको जॉइंट पेन होंगे ज़्यादा। तो 3 तरह के आपको मैंने बताया, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ 3 प्रकृति के लोग होते हैं, परंतु इसमें जिनको तनाव रहते हैं तो इनको जो कफ वाले उनको एलर्जी, दामा और गठिया रोग होंगे। पित्त प्रकृति वाले को उच्च रक्तचाप और हृदय रोग होंगे। वात प्रकृति वालों को आमाशय में अल्सर हो सकते हैं, या तो उनको थायराइड की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं आगे। बहुत सारे अन्वेषण हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, शोध भी हुए हैं। समस्त रोगों का, जितने भी आज आप रोग देख रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं तनाव का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आज जो एलोपैथी हम जिसको कह रहे हैं, वो इसका पूरा निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। और कहीं न कहीं हम जब पेट से संबंधित, जैसे हम मान लीजिए अल्सर हो गया या बीपी हो गया, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है और दवाई दे देता है। और आप खुद देखिए कि जो दवाई लोग ले रहे हैं, क्या उससे बीपी कंट्रोल तो होते हैं, पर लोगों को समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है हमारे लिए। जैसे कोई भी रोग आप ले लीजिए, गठिया है, तो ये सारे जितने भी रोग हैं जो तनाव से प्रभावित रोग हैं, जिस रोगों का हम यहाँ पर बात कर रहे थे, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है। और रोगों का जो प्रमुख कारण तनाव है, परंतु तनाव को दूर करने के लिए हमारे पास में एक योग, नेचुरोपैथी जैसे हमारे पास एक प्राचीन विद्या है, जिस विद्या को हम कहीं न कहीं वेद में भी आप इस विद्या का चर्चा सुनते हैं। जैसे योगे योगे तमक्षरम, आपका सामवेद का एक मंत्र आता है कि योगे योगे तमक्षरम वाजे वाजे हवा में सखाए इंद्र मुते। तो हम लोग यहाँ पर योग से बात करेंगे, योग से किस तरह से आप तनाव से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, तनाव से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो योग प्राणायाम से हम सभी तरह के साध्य और असाध्य रोग में हम योग का सहयोग ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप इससे अपने आप को तनाव से बचा सकते हैं, असाध्य रोगों को भी। क्योंकि तनाव का हमारे मस्तिष्क में सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क में ही हमारे जैसे जो भी भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे अंदर जो उत्तेजनाएं आते हैं, या हमारे जो ब्रेन में, हमारे जो मस्तिष्क में सपनों का जो सृजन करते हैं या कोई नया प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में जब लगातार क्षमता से अधिक कार्य करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और मानसिक तनाव जब उत्पन्न होता है व्यक्ति का, तो हमारे जो हार्मोन्स है, जो एक तरह से केमिकल आप कह सकते हैं, वो भी हमारे अनियंत्रित हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं। तो हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। जो रोग यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, बीपी, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, गठिया, दामा, ये सारे रोग हमारे कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। कि मस्तिष्क में ज़्यादा तनाव, प्रेशर आता है, और हमारे अंदर के जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल है, वो अनबैलेंस हो जाते हैं, और हम इन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अच्छा, मानव मस्तिष्क में यदि समझना है तो हमारे जो मस्तिष्क की जो संरचना है, इसको भी हमें थोड़ा सा, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क में जो अन्य प्राणियों से, जितने भी हमारे जैसे हम जलचर, थलचर, या जितने भी हम जो 84 लाख योनियों की जो बात करते हैं, उसमें जो मस्तिष्क, जो मनुष्य का ही एक योनि ऐसा है जिसका मस्तिष्क जो है वो अलग ही तरीके से इसकी संरचना हुई है। क्योंकि मस्तिष्क के अंदर जो भी हम कल्पना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, या सृजनात्मक कार्य करते हैं, तनाव को सोचने का जो एक अंग है, मानव मस्तिष्क के कुछ जो हिस्से हैं जिनका तनाव से सीधा संबंध है। यानी जैसे एक सेरिबेलम है, जो आपको यहाँ पर आप अनुभव करेंगे, जो हमारा, जिसको हम छोटा मस्तिष्क इस तरह से कह सकते हैं, या जैसे हमारे हाइपोथैलेमस है, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रभावित होते हैं। जो सेरिबेलम है, ये जो जैसे इसका जो काम क्या है, जैसे सोचने का, तर्क करने का, योजना बनाने का, और बहुत पुराने चीज़ों को याद रखने का जो काम है, ये इस सेरिबेलम का काम है। और यहीं पे बात करते हैं जब हाइपोथैलेमस का, तो हाइपोथैलेमस क्या है, थैलेमस के नीचे पाए जाते हैं। और जैसे भूख, प्यास, या जो इमोशनल होना, किसी भी चीज़ को भावनात्मक रूप से आप किसी चीज़ से जुड़ जाना, प्रेम संबंध, इन सारे चीज़ हमारे हाइपोथैलेमस में ये कार्य होते हैं।
जैसे आप किसी कमरे में हैं और उस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो जानकारी है ये हमारे प्रेषित करते हैं, और फिर जो थर्मेस्टिक सिस्टम है इसके माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि कमरा ठंडा हो गया है या कमरा गर्म होता है, तो हमें सूचना मिलती है। तो ये सारा चीज़ हमारे कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से हमें सिग्नल मिलता रहता है कि हम अपने स्किन से, आँखों से, जो हमारे जो आँख है, स्किन है, और ये सारे चीज़ हमारे ब्रेन को एक मैसेज भेजते हैं। कान है जो सूंघने की है, ये सारे चीज़ हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, और जब ये ब्रेन को मैसेज जाते हैं तो ब्रेन उसी तरह से फिर आपका कार्य करता है। यदि तनाव के आंतरिक कारण पे बात करें कि इसके कुछ आंतरिक कारण हैं, जैसे परिवार, समाज। परिवार में जब आप परिवार में सामंजस्य नहीं है तब भी व्यक्ति को तनाव होता है। जैसे पिता से पुत्र का ठीक तरह से व्यवहार ना होना। समाज में यदि समाज का जो संरचनाएं होती है उससे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रभावित होता है। तो समाज को भी हमें स्वस्थ बनाना है, परिवार को भी हमें स्वस्थ बनाना है। ये भी आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। जिस परिवार में सभी लोग का कम से कम शाम को एक समय बैठना, आपस में एक दूसरे से चर्चा करना, ये भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो परिवार का भी ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। यदि परिवार में विखंडन हो जाता है, पति पत्नी के साथ ठीक से व्यवहार ना होना, या पिता पुत्र के साथ, भाई भाई में रिश्ता ठीक नहीं होना, तो ये इससे भी व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव में जा रहे हैं। समाज को भी हमें स्वस्थ रखना है कि समाज में कुछ गंदे लोग हो जाते हैं तो इससे भी अपने आप को, पड़ोसी अगर ठीक नहीं है तो भी व्यक्ति को तनाव हो जाते हैं। शिक्षण संस्थाएं में भी किसी न किसी तरह से बच्चे जो आज के विद्यार्थी हैं, जैसे पेपर दे, उसका रिजल्ट 2 साल बाद आ रहे हैं, पेपर दिए, कोई पेपर लीक हो जाता है। जैसे अभी आप बहुत सारे सुनते होंगे कि ये पेपर का एग्ज़ाम लिया गया और वो लीक हो गया, बच्चे जो तैयारी किए उसका फिर 2 साल तक वो रुके रह जाते हैं। तो वो सारे बच्चे भी कहीं ना कहीं तनाव में पहुँच जाते हैं। मित्र का ठीक तरह से व्यवहार नहीं हो जाना, तो ये सारा चीज़ हमारा कहीं ना कहीं, सब चीज़ हमारे शरीर में, हमारे अंगों में ये प्रभाव डालते हैं, मस्तिष्क में। तो ये भी आपके कहीं ना कहीं तनाव में आपको इससे प्रभावित हो रहे हैं व्यक्ति। अब हम बात करें कि किसी व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें तनाव है या ये तनाव से इस समय ग्रसित है। तो तनाव से यदि जो व्यक्ति ग्रसित है तो उसको 2, 4, 5 चीज़ आप उसके लक्षण उसको मिलेंगे आपको। एक तो उसके चेहरे या गर्दन में, गर्दन के आसपास बोलेंगे मेरे कंधे में या मेरे गर्दन में आसपास में मेरे दर्द रह रहे हैं, या वो बताए कि मेरे यहाँ पर दर्द है। मतलब हर दूसरे दिन, हर 5वें दिन उसको दर्द महसूस होगा। तनाव के कारण ही ये दर्द होते हैं। कमर में दर्द हो जाते हैं क्योंकि आपका जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कहीं ना कहीं आपके स्पाइन को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति तनाव होते हैं और उसके कमर में उसके दर्द ज़्यादा मिलेंगे ऐसे व्यक्ति को। वो बहुत ही ज़्यादा किसी भी आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ में अपने प्रतिक्रिया देना, अपने विचार रखना या बहुत ज़्यादा उसको बोलना, व्यक्त करना, ये भी जो व्यक्ति तनाव से प्रभावित होते हैं। क्योंकि तनाव, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे वात रोगों के ऊपर, कि वात से जो प्रभावित होते हैं उनको आमाशय में अल्सर हो जाते हैं। तो वात जैसे व्यक्ति, वात से प्रभावित व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसी तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं देंगे वात से प्रभावित व्यक्ति। तो वात से प्रभावित व्यक्ति भी कहीं ना कहीं वो अपना तनाव में होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो व्यक्ति तनाव में होगा, स्ट्रेस में होगा, तो अपना विचार या अपना भाव किसी तीसरे को जब वो सुना देता है तो बहुत ही वो रिलैक्स फील होता है, यानी उसके अंदर के कार्बन निकल जाते हैं, तो उसका तनाव है ना वो कहीं कहीं रिलैक्स हो जाता है। या किसी घर में कहीं लड़ाई हो जाती है, कोई विवाद होता है, तो आप देखिए उसकी उन व्यक्ति का बात क्यों केवल आप सुन लीजिए 10 मिनट आराम से, वो बिल्कुल तनाव से फ्री हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हाथों में पसीना बहुत जल्दी आएंगे या उनको ठंडे का बहुत ज़्यादा महसूस होगा। सांसों का उनका असंतुलन हो जाएगा, सांस बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे हमारा ये राइट स्वर है, ये सूर्य स्वर है, लेफ्ट है चंद्र स्वर है। तो हमारे जो दिन में है ना वो चंद्र स्वर चलते हैं, रात में है वो सूर्य स्वर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी श्वास इसके बहुत जल्दी उतार चढ़ाव रहे, यानी 3 से 3.5 4 घंटे में श्वास बदलनी चाहिए और वो ऑटोमेटिक होते रहता है, आपको पता नहीं चलते हैं। परंतु जो व्यक्ति तनाव रहते हैं उनका हर 10 मिनट में, 15 मिनट में उन व्यक्ति का श्वास है ना वो बदल भी जाते हैं और वो व्यक्ति असंतुलित हो जाते हैं। तो ये तनाव का लक्षण है।
और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नकारात्मक होंगे। आप उनके पास मिलेंगे या उनसे बात करेंगे तो बहुत ही व्यक्ति वो जल्दी नकारात्मक जैसा बात करेंगे, अपने आप को हताश मिलेंगे और हृदय में उनके जो हृदय का जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो बढ़ जाते हैं जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं। जैसा भी हम बात कर रहे थे कि तनाव में जो व्यक्ति ज़्यादा रहता है उसको हार्ट अटैक की समस्याएं होती है या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम बात करें कि जो तनाव के जो लक्षण है वो हृदय के उनके धड़कन बढ़ जाती है। अमाशय में अधिक अम्ल बनना, अम्ल यानी पित्त बनना, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होंगे उनको जो तनाव से प्रभावित होंगे। उन लोगों के याददाश्त जो मेमोरी है वो थोड़ा कमज़ोर मिलेंगे, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाएंगे, सामान कहीं रखे भूल जाएंगे। तो ये सारे चीज़ होते हैं। यदि बात करें हम लोग इसको उपचार कैसे करें, जैसे तनाव तो हो गए और सभी को तनाव है। कोई ये कहता है कि जो मुझे तनाव नहीं है, तो किसी को 2 घंटे के लिए हो जाता है, कभी ऑफिस में है बहुत ज़्यादा अचानक काम हो गए हैं तब भी व्यक्ति स्ट्रेस में, चाहे वो आधा घंटे के लिए हो गया हो। किसी को अपने पुत्री की शादी करना हो तो तनाव है, जॉब नहीं है, जॉब चला गया है, ओवर टाइम लग गया तो तनाव से सभी लोग प्रभावित है किसी न किसी रूप में। परंतु इसको बैलेंस कैसे करें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। तनाव को आप कैसे बैलेंस करेंगे, हम लोग बात करते हैं उपचार पर। तो देखिए कुछ आसन है, क्योंकि जो योग है ना, योग क्या कहता है, समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण गीता में एक श्लोक बताए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धया, सिद्धि मिले चाहे ना मिले, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, कोई आपका सम्मान करे चाहे कोई अपमान करे, इस सब अवस्था में जो व्यक्ति योग से जुड़ जाता है वो सम रहेगा। सम यानी ठीक है, किसी ने अपमान कर दिया तो कोई बात नहीं, उसका ये स्वभाव है। वो यानी अपने मैसेज इस तरह से मस्तिष्क को देगा कि वो कम से कम तनाव से बचेगा धीरे धीरे। तो ऐसे व्यक्ति योग से जब आप जुड़ जाते हैं तो देखिए इसमें कुछ आसन है, जैसे है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन में खड़े होकर पैरों को आपस में लपेट के और सीधे खड़े होना होता है। इससे कहीं ना कहीं आप अपने फोकस को बढ़ाते हैं। जब फोकस बढ़ाते हैं तो आपका जो माइंड है ना, इसमें एक अच्छा मैसेज जाता है। आपके मैसेज जाने से क्या होता है कि आपको जो हैप्पी हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं। तो गरुड़ आसन, कोण आसन और शवासन। शवासन आप सभी लोग लगभग जानते होंगे। शवासन में लेट जाना है और शवासन में लेट के कुछ नहीं, केवल अपने श्वासों को, अपने जो ब्रीदिंग, जो नॉर्मल जो श्वास चल रही है उसको केवल आपको देखना है। जब आप ये देखेंगे आपका माइंड आपके श्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं तो आप बाहर के सारे विचारों को आप भूल कर और अपने श्वास के साथ आप देखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी, यानी आप तनाव से रोज, केवल इसको ज़्यादा नहीं 3 से 5 मिनट इसको कर लें। जो व्यक्ति तनाव में है या तनाव में ज़्यादा रहते हैं या जिनका मस्तिष्क से ज़्यादा संबंधित काम है, ऐसे लोगों को ये 3 से 5 मिनट इतना तो समय व्यक्ति निकाल सकता है, इतना व्यक्ति को करना चाहिए। अभ्यास करने से प्रारंभिक अवस्था में शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। जब आप तनाव रहेंगे तो जो मांसपेशियों में दर्द होते हैं या शरीर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, तो इसमें धीरे धीरे आपके मांसपेशियों में सुधार आने लग जाएंगे। आपके जो स्टिफनेस है वो कम होने लग जाएंगे और जब साधना आपकी बढ़ती जाएगी तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता जाएगा। प्राणायाम बहुत ही अच्छा इसमें लाभ करता है आपका। एक तो आप सीधे बैठ जाएंगे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आपको सुविधा हो बैठ जाए। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो आप कुर्सी में बैठ जाए और अपने लंबा गहरा श्वास ले और छोड़े, जैसे इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो इस तरह से कम 20 से 25 बार अपने श्वास को ले और श्वास को छोड़े। इससे भी आप जब बाहर के चीज़ों से अपने मन को हटाकर अपने श्वास के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो आपका कहने के आपके मन को, आपके माइंड को बहुत ही रिलैक्स मिलेगा और आप तनाव से बचे रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आजकल हर जगह आपको लोग करते मिलेंगे, पार्कों में, पर किसी अच्छे योग टीचर से आप पहले सीखें। विष्णु मुद्रा बना लें और
इस तरह से लेफ्ट से श्वास ले और राइट से श्वास को बाहर निकाल दे। फिर राइट से श्वास ले और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दे। तो श्वास लेने का और श्वास छोड़ने का, इन दोनों तरीकों को यदि आप सही से करते हैं तो, क्योंकि जब आपका चंद्र स्वर है यानी जब जो शांत है, जो कूल डाउन करता है ये, तो आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा। तो आप बिल्कुल अपने आप को कूल डाउन रखेंगे, ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे। आपका जब मस्तिष्क ठीक रहेगा तो आपका आमाशय भी ठीक से काम करेगा। एक है ब्राह्मणी प्राणायाम, कान बंद करेंगे और आँख इस तरह से सन्मुखी मुद्रा बनाकर जीभ को अपने तालु से लगाकर और माँ का उच्चारण करना है। ये ब्राह्मणी प्राणायाम है। इस ब्राह्मणी प्राणायाम को कम से कम रोज 10 से 15 बार इसको किया करें। और योग निद्रा बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आप इसको करके देखिए। जो तनाव से प्रभावित लोग हैं, आपको आंखें बंद करके शवासन में लेट जाना है और अपने शरीर के सारे अंगों को, जैसे पैर का अंगूठे से शुरू करें, अंगूठे को, घुटने को, काफ मसल्स को, इन सब को आपको अपने माइंड से एक उसको रिलैक्स करना है और उसको शिथिल करना है। अपने मन को ये मैसेज देना कि हमारे ये सारे अंग बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई विकार नहीं, कोई इस तरह शरीर का हर अंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हार्ट, थायराइड ग्रंथि, आपके आँख, आपके कान, इन सब के ऊपर ध्यान करना है। इसको बोलते हैं योग निद्रा। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आप इसको करें। और मैं योगाचार्य अशोक, ज्ञान दर्शन के माध्यम से समय समय पर हम आपको योग से समाधान बताते रहते हैं कि कैसे आप, आज का जो विषय था तनाव से, कैसे आप योग प्राणायाम से आप इसका समाधान कर सकते हैं। आगे भी हम आएंगे। तो आज का जो विषय था इसको आप सुने और हमारे साथ जुड़े। और सभी ज्ञान दर्शन के सभी दर्शकों को पुनः नमस्कार, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। और यहाँ के सभी सहायक जो लोग हैं, जो इस हमारे विचार को, हमारे ज्ञान को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। ओम शांति। We welcome you to join the bouquet of programs offered by the School of Humanities, the Indira Gandhi National Open University, New Delhi. The Indira Gandhi National Open University, New Delhi is a mega university today. It was created by an Act of Parliament in 1985. It is the world's largest university with an enrollment of about 3.5 million current students and 3.2 million alumni. IGNOU has also been accorded the highest grade of academic excellence, A++, by the National Assessment and Accreditation Council, or the NAC. Now, during your time at IGNOU as a learner, we will help you complete your program of study with world-class printed materials, audio and video programs. We have more than 35,000 academic counselors who will guide you till you complete your program of study. We also provide live interaction with your teachers at the headquarters via teleconferencing mode, and live interactive radio counseling besides this, supported by regular TV and radio broadcasts. The School of Humanities was created in 1988, and we welcome you warmly to join any of our programs of study. IGNOU degrees, diplomas and certificates are recognized not only in the country but are also very well received across the globe. We look forward to your journey with us, and we welcome you once again. The school
Welcome viewers to this session. In today's session, we will be talking about protection of traditional knowledge. Protection of traditional knowledge, actually, this session is based on MIP 106 for the students of PGDIPAT, Postgraduate Diploma in Intellectual Property Rights. They know that it is a part of MIP 106. So, traditional knowledge is a part of MIP 106, and we will be talking, our complete booklet is dedicated to the traditional knowledge, and in this session we will be talking about protection of traditional knowledge. So the structure of the session is that we will be speaking about the meaning of traditional knowledge, because when we speak about traditional knowledge, it is important to understand the meaning of traditional knowledge. We will also talk about the significance of traditional knowledge, and third, the aims for protecting traditional knowledge, why we should protect traditional knowledge. So there are three important aims, the three important objectives of protecting traditional knowledge, which are prevention of biopiracy, for the benefits to national economy, and for the conservation of environment. So this is the structure of the session, and we begin with the meaning of traditional knowledge. Now, what is traditional knowledge? Traditional knowledge, it refers to the long-standing traditions and practices of certain indigenous or local communities. It is traditional only to the extent that its creation and use are part of the cultural traditions of the communities. Traditional does not mean that the knowledge is ancient. So whenever we think about traditional, we think that it must be an ancient knowledge, but it is actually not an ancient knowledge. That means traditional knowledge is evergreen. It is ever growing. Even a knowledge which is invented now today, or if we have invented some knowledge which is of importance to the traditional people, to the indigenous people, even that knowledge can be considered as traditional knowledge, because a knowledge which is traditional, which is being followed by traditions, or which is being followed by the indigenous people, is known as a traditional knowledge. So if a knowledge which is invented today, or if somebody discovers or invents something which he or she has discovered today itself, but it is helpful to the indigenous people, is known as a traditional knowledge. So it does not mean, the traditional knowledge does not mean, because the term is traditional, that it is ancient. And as I told you, traditional knowledge is created every day. So we can say that it is evolving as a response of individuals and communities to the challenges posed by the social environment. So whenever we need something, because you know that discovery, invention is you can say whenever we need something, then only we go for inventing it. So if we have a challenge, or if the society is posing a challenge, is facing a challenge, then we definitely think of inventing something. So if the society is facing a challenge, the invention is done there, or a discovery is done, then that type of invention is also known as a traditional knowledge. Traditional knowledge is also contemporary knowledge in its use. So we can also say that it is seen most of the times that traditional knowledge has been orally passed from generations, from one person to another. And so finally we can say that it is intergenerational and evolves continuously. So seeing the meaning of traditional knowledge, it means that traditional knowledge is orally passed from generation to generation. That means the traditional knowledge is not codified. It is not written anywhere. This knowledge is passed orally from one generation to another generation, and it is intergenerational, and it involves continuously. Continuously means it is ever evolving. Even today we are creating traditional knowledge. Every community, every indigenous community is creating traditional knowledge because it is suiting to their community. So knowledge which is suiting to any indigenous community is known as a traditional knowledge. And this knowledge, as it has already been told, it is being orally passed from generations. It is not codified anywhere. That is why it is known as traditional knowledge. Now, having known that it is a traditional knowledge, it is also important that we should protect this traditional knowledge. In this session, we will be seeing that what is the significance of traditional knowledge and how we will be protecting traditional knowledge. So when talking about significance of traditional knowledge, it is important to know that it is a well-documented fact that TK, or traditional knowledge, plays an important role in the global economy
and it is valuable not only to those who depend on it for the daily life, but to the modern industry and agriculture too. So if we see that any knowledge or any traditional knowledge which is also suiting to a community or to the masses at a large, we try to take that knowledge from the tradition, from the indigenous people. So that is the reason that it needs to be protected. And these knowledge are not reliable estimates of the total contributions of traditional knowledge associated with the traditional crop varieties to the global economy, but the contribution of the traditional knowledge in the development and growth of pharmaceuticals and biotechnological industries are widely reported. So we see that the traditional knowledge, the contributions of TK is associated with the crop varieties. You must be hearing about that. We have the scientists have developed a new type of crop. The scientists have come to know about a new type of crop, a hybrid crop or a new crop. So how do we know that a new type of crop has evolved or it is benefiting us? It is because of the farmers which are growing in the farms. Every day they are growing in the farms, and they have a extensive knowledge of the of farming, of the crops which they are growing every day. Because of this knowledge, every day they are evolving, and they are coming to know. They know that if the crop rotation is done in this type of field, or if a hybrid type of plant is grown in this type of farm, it will be beneficial for this farm, or it will be beneficial, or we will be growing a new type of crop, or a new type of variety will be seen. So because of the knowledge, because of this knowledge, we see that the global economy, even to the global economy, these crop varieties are also contributing towards the global economy and towards the development and growth of pharmaceuticals and biotechnological industries. How pharmaceuticals, every day we get a new drug from this, we are trying to develop a new drug for the medicines. Already medicines are there we have new medicines. There are medicines in the market, but still we try to develop a new medicine which is having a lesser effect, or which is having a lesser side effect. And that is one of the reasons that when the pharmaceutical society, the pharmaceutical industry is having a lot of, the pharmaceutical industry is benefiting from this traditional knowledge. We can say the traditional knowledge, the pharmaceutical industry owes to the traditional knowledge, because the farmers who are in the farmers and the people who are in the farm, they know better that these type of plants have medicinal properties. As we know that neem and so many other medicinal plants like the basil leaves and all, they have medicinal properties. And because of this knowledge, because it has been orally passed, and now that every person knows that these type of plants have medicinal properties, the pharmaceutical society, the pharmaceutical companies, they use this type of knowledge. And even the biotechnological industries, they are also benefiting a lot. Now, traditional knowledge is also associated with biological resource, as it is an intangible component of the resource itself. Traditional knowledge also has the potential of being translated into commercial benefits by providing valuable leads for the development of useful products and processes. Now, whenever we think about a new drug, it's not always a chemical thing which we are thinking of. The knowledge, whenever we are thinking about a drug and we go for clinical trials and we go for testing of those drugs, it is always the medicinal properties of these traditional knowledge, these plants, which is kept in mind, and then only by the mixture of those, or by testing it in the labs, we come to know that a new drug has been evolved or a new drug has been found. So it is also, we have to keep in mind that these traditional knowledge is also used in the commercial for the commercial benefits, for the commercial drugs which we are also selling, which is also being sold in the market. Now, these valuable leads provided by the traditional knowledge, they save time, money, and investment of modern biotech into any research and product development. The significance of traditional knowledge is much broad-based, impacting many aspects of national life. And its protection is important for communities in all countries, particularly in developing and least developed countries. Traditional knowledge also plays an important role in the economic and social organization of those countries, and placing value on such knowledge is a viable means of promoting a sense of national cohesion and identity.
We can also say that traditional knowledge can be about medicines, healing practices, or in the form of cultural expressions such as folk songs, dances, handicrafts, handlooms, agricultural practices, etc. So when we are talking about traditional knowledge, it does not only means medicines or that knowledge which is related with farming, or the knowledge of medicines which is benefiting the pharmaceutical industries, but it also means folk songs, dances, handicrafts, handlooms, and of course agricultural purposes. So in all we can say, so a new term has been given for the traditional knowledge, which is for which involves the handlooms, agricultural practices, handicrafts, etc., which is known as traditional cultural expression. Because this is also the handlooms, the handicrafts, which we use now and about more every whenever you go to a particular state, you will always see that a traditional you find a traditional handicraft there, and that is something which is always alluring. We want to understand that how that product is being made, or how that product is being, because a number of the community people, they use that to a larger extent, and it is being used by that community. But now that India has become because in India, in every part of India, we see that people from Rajasthan, they have traveled to Delhi. From Delhi, they have traveled to Kolkata. So we see that the handicrafts which are made in Kolkata is also usable now in Delhi. It is also found in some remote place of Bihar, in some place of Uttar Pradesh or Uttarakhand. So we see that these handicrafts, these handlooms, these agricultural, these songs, these folk songs, and these dances, they need protection, because anybody cannot say that this is can use it and say that it is mine, or can steal that, which is actually the you can say an effort of the community, the traditional community, or the indigenous community to which it belongs. So definitely we have given the expression to these handicrafts and these these particular expressions as traditional cultural expressions. Now, coming to the aims for protecting traditional knowledge, there are three important aspects which we require to understand that why we should protect traditional knowledge. Because whenever we speak about traditional knowledge, it is important to understand that traditional knowledge needs to be protected. Just because it belongs to a particular community, or because it is being developed by a particular community, or it is being used by a particular community or indigenous community, it needs to be protected, because it is not, you can say that we cannot, a particular person cannot say that it is my work, or I have invented this, or I have discovered this, because it attributes to a particular community. The traditional knowledge, or the traditional handicraft, or whatever we say, whatever traditional expression is, it is it actually attributes to a particular community. So that is one of the reasons that we need to protect that, because any one person cannot say that this is mine, or it has been used by me, or from generation I've been using it, or from my generation only my family has been using it. It is a particular indigenous community which is using it, or it is a particular community, whoever community. For example, let me give you an example of the Kalbelia dance of Rajasthan. It is a very famous dance, and at one point of time people did not know what this dance, and so the Bollywood industries were using it like anything, and because most of the parts of the countries did not knew that this Kalbelia dance was from Rajasthan, because they never attributed it that it is a folk dance and it is this dance from Rajasthan. So people did not know. They thought that it was this type of dance was an invention of, or it was a choreographed by the Bollywood itself. But later on, when people from Rajasthan, they themselves came, and the people from Rajasthan, they said that no, this dance or this folk dance is mine, and it belongs to my community. Definitely people came to know that this folk dance or this type of songs is attributed to the particular community of Rajasthan. And this is how, because anybody can steal that knowledge, that traditional knowledge, and say that it is mine, it needs to be protected. So the principal aims for protecting traditional knowledge are the concern about the granting of patents
or other IPRs covering traditional knowledge to persons other than those indigenous communities, peoples who have originated and legitimately controlled the traditional knowledge. That means if the traditional knowledge is alive, it is because of those people, of those indigenous community who have been practicing it from generations. You cannot attribute to a particular person, but to a particular indigenous community who has kept this knowledge alive for a very long time, and because of which this traditional knowledge is seen today, or because of which we are witnessing this traditional knowledge. Concern that traditional knowledge is being used without the authorization of the indigenous communities, peoples who are its holders, without proper sharing of the benefits that accrue from such use. For example, as I told you, that when the music industry or when the film industry, they use a particular folklore or a song from any community, or when they're using a handicraft or any poster or any type of design, painting, they should attribute it, or they should acknowledge that this painting or this particular song or folklore is attributed to this particular community, or has been taken from this particular community, from this part of the indigenous community, and they owe it, they are the people who have kept it alive. They cannot say that they have done it, they have done a little bit of vision mixing, or they have done a little bit of choreography, change of choreography, and it is theirs. Because the base of that, or because of the originality, lies in the indigenous community, the people who have actually developed it. So this is very important. And if you have taken something, you should acknowledge and also accrue the benefit to them. You should also share that benefit to that particular community, that indigenous community who owes credit, because the credit goes to actually them who have kept that kept that art alive, and because of that which we are seeing it today. The second important aspect for protecting of traditional knowledge is the prevention of biopiracy. There are a number of reported cases of biopiracy. Biopiracy actually means the misappropriation and commercial exploitation of traditional knowledge under patents and other IPRs, namely patents on natural products such as neem, turmeric, basmati rice, periwinkle. In these cases, claims in the patents on plants and the genetic resources are not fundamentally different from the practices applied by the traditional communities and the utilization of these plants as food, cosmetics, or traditional medicines. Some of these cases have been successfully challenged, like neem, turmeric. Now, when we are talking about prevention of biopiracy, I think everybody must have heard that neem, turmeric, they are used as, they have healing power, and we benefit from neem. If you ask in our country, in India, from anyone that do you know the benefits of neem, I don't think that anybody will say that they do not know the benefits of neem or turmeric. And we use it as Dadi Ma ka khajana. Everybody knows that whenever you are having some problem, or you are having a gum bleeding or something, we use the neem datun, which is being used in the villages still now. And they're using the neem datun, and which is very, very beneficial. Today, the Ayurvedic speaks about, Ayurveda, they speak about neem datun and all that. Why? Because they know that it has medicinal powers. It has the powers to benefit us from certain, diseases. And similarly, turmeric also has healing power. So whenever you're having any problem, like you're having a sort of, you are burnt or something, you apply turmeric. Or even in the burnt, when there's a small cut, or your dadima or your grandmother has always asked you to apply turmeric, because we know that it has the medicinal power. It has the healing benefit. And similarly, basil leaves. We've been using basil leaves for generations because we know that it has medicinal benefits. So these type of products, they were used, and it is important, it is pertinent to speak here that India has never gone for plant patents. But in US, they had patented the plants like neem, turmeric, basmati, and we have fought and we have successfully won. And we can say we have challenged and we also won by saying that these were our traditional knowledge.
Now, these raises an important issue of legal protection of traditional knowledge at national and international level. So, the aim of traditional knowledge protection is not only to recognize the positive rights in respect of traditional knowledge, but also to prevent unauthorized appropriation and ensure benefit sharing out of its use as mandated under the Convention of the Biological Diversity. So, if you're taking it from the indigenous people, you have to accrue that benefit. Whenever you're talking about benefit sharing, if the indigenous knowledge is known to you, if a community, normally what happens that the R&D, the research and development companies, they go to the indigenous communities, and when they see that a community is practicing for a very long time some agricultural products for their own use, or they've been using some plants or some type of medicinal properties plants, or then they go to them and ask them to give this type of knowledge to them so that they can use it for R&D for a particular benefit. But here it is important that if the R&D companies or anybody is approaching to these indigenous communities, because the indigenous people, they do not know that whether they will be really benefited. So there should be a sort of benefit sharing. If only they want to share the knowledge, then they should be allowed to share the knowledge. And if that knowledge is also shared, they should be also acknowledged that this type of knowledge has been taken or is attributed to that particular indigenous community, and this knowledge is coming from that community. So unless and until that acknowledgement is there, the benefit, the society should be protected. They should have a legal protection. There should be a legal right that whether they should share that knowledge or not. And if at all an infringement is done, then they should have every right to sue it before the court of law. Now, coming to the benefits to national economy, even by protecting the traditional knowledge, there are a number of benefits to the national economy. Protecting traditional knowledge has the potential to improve the performance of many developing countries, especially the developing countries' economies. We are not talking about the developed countries. We are talking only about the developing country economies. India is a developing country, and definitely by protecting traditional knowledge, we are also improving the performance of the economy, the developing country economy, like our country's economy, by enabling greater commercial use of their biological wealth and increasing export of traditional knowledge related products like the handicrafts, like the agricultural products, like the when we're talking about handicrafts, a number of things come into the handicrafts: the potteries, the handicrafts, the designs, the special type of GIs also, and medicinal plants, the traditional agricultural products, herbal medicines, even herbal medicines. You will be seeing that even herbal medicines are exported, and this is something which we need to acknowledge. Cultural, and this is how we are benefiting to our national economy. The cultural heritage tourism is getting benefited. The non-wood forest products, NWFPs, are traded in both domestic and international markets and already provide substantial benefits for exporter countries. So when we see that there is an expo, or then there is a sometimes we see that there is a mela. Even in Delhi, we see the Paryatan Parv or this type of melas. What are these? These are just to to make the people aware that how traditional knowledge or this type of handicrafts which are being produced by different states and which are also beneficial to us, and not only beneficial but are also very alluring and very good. We understand that in India, cotton is one form of cotton is used at large, and there are a number of things which we can do with cotton. Because of this particular cotton product, because we can wear cotton, so definitely we should think that how we can use cotton. And the traditional indigenous communities, they've been using a tremendous they have used a tremendous effort to traditionalize cotton. And when we come to these type of melas like the expos and all, we see that what is the new use of these products, and how we can buy, and how not only buy but commercialize even in the export market.
The third very important aspect is the conservation of environment. The protection of traditional knowledge is important for the conservation and sustainable development of environment, as much of the world's crop diversity has been conserved and preserved by the indigenous local people, which has helped in the protection and conservation of biodiversity. So the traditional knowledge of the indigenous communities is central for the ability to operate in an environmentally sustainable way and to conserve genetic and other natural resources. So conservation of environment, when we talk about most of the indigenous communities, they live in areas where the vast majority of the world's plant genetic resources are found, and the knowledge is central to the conservation and preservation of genetic resources and other bioresources. So for centuries, the traditional knowledge has enabled rural indigenous communities to survive in balance with their natural environment. And by virtue of providing for this balanced relationship, traditional knowledge is truly the science of sustainable development at the local level. So in today's session, we have seen that how traditional knowledge not only benefits the economy, but it also conserves our environment, and it also prevents from biopiracy. So these are the important aims for the protection of traditional knowledge. We've also studied about what is the meaning of traditional knowledge. We have talked about the aims of protecting traditional knowledge, and we have also talked about the significance of traditional knowledge. So I hope you have enjoyed my session, and in case you have any query, you can always mail me at suneetkashyap@ignou.ac.in. And with that, I come to the end of the session. Thank you very much.